Those who raised their hands that they have given the contest, can you please write in the chat box how many questions have you done? आज का कंटेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि क्योंकि वो ड्यूटो का है एंड like there is more scope of improvement and be regular for the contests. Like guys, I am audible. If I am audible, anyone can speak up and say like you are audible, bhaiya. Yes, भैया. Okay, somebody tried the first question and it didn't got accepted. Like what? Okay, we will discuss it in a few minutes. Like also mention the time complexity of the approach. If you don't know the time complexity of your approach, then please just say your approach and we will discuss about the time complexity matter. Surya shared his approach. What he has done is the sum of all points should be even, right? Because it doesn't make any sense, right? For each match, they were allocating 2 points. So none the number of matches conducted doesn't matter because the sum should be even as each game allocates 2 points. So if it is odd, then it should return one, return -1 if the sum of the point p1 plus p2 plus p3. And the two cases he has drawn is
Either all games are draw, so total points is total points by 2, and P. The second case is only P1 and P2 draw their games, and P3 has won few more matches. Like it's near, like you are near to the answer, but like there is some error. Okay, let us start our session. Basically, see, this is our problem. Uh, like, how many of you didn't understand the question? Like, what was the question is saying? Is it understandable for you? Like, did you understand the problem? How many of you couldn't understand the problem? Please raise your hands. Like, how many of you guys couldn't understand the problem? If you couldn't understand, raise a hand. Okay, I think the question is clear to everyone, right? Like, let us go through again. And like, there are three friends gathered. Like, basically, there are three friends playing a game of chess, and if the winner gets 2 points and loser gets zero, in case of a draw, 1-1. like like each of the player points have been measured as P1, P2, and P3, and they will always follow this rule: P1 greater than P1 less than or equals to P2 less than or equals to P3. Like, we have to find that, like, the number of points gained by the each player will be given, and what we do have to find is maximum possible draws. Like, there could be may, like, there doesn't, like, we don't know how the games were played out. There could be some matches won by them, and there could be some matches lost by them. But what do we consider is, we have to find out the most possible number of draws that could happen in this P1, P2, P3 combination, right? uh, if, like, there may be a case like, the answer test cases were given in such a way that the state couldn't be possible. Like, uh, there isn't, like, take an example, two take an example 333, as they have given in this sample test case. There are several inputs, and like, uh, the 3-3 case and 1-1 case is not possible to attain. uh, why could anyone tell? Can anyone guess why 1-1 and 3-3 case is not possible? Like, 1 1 1 3 3 and 3. uh, why these two cases are not possible? Can anyone say? Bhaiya, because in every game we are seeing that either one person will win, so Hmm. 2-0, or either it will be a draw, then 1-1. Then so always the total point is increasing by 2-2. Hmm. So that point is clear, right? Even if there are two outcomes: win, win two, uh, loss zero, and win loss combination zero, and draw combination leads to 1, 1. So here also sum is 2, and here also sum is 2, right? So for any combination we can take, there is contribution of 2. So the multiple of 2 should be even, right? The multiple of 2 should be even. This is equals to sum of P1 plus P2 plus P3. So as
no matter the distribution, the sum of points should be even, because each game is contributing 2 points to any of the players. So no matter the distributions, win, loss, or draw, it should be even, right? So the combinations 1 1 and 3 3 are not possible. Why not possible? Because the sum of the points should be even, and the sum of 1 1 1 1 is 3, and the sum of 3 3 is 9. So it is odd. So it is not attainable, as the question is mentioned right here. Uh, uh, we have to print -1 if the games are not reachable. If there isn't a way to obtain P1 P2 as a result of non-negative number of games between the three players, we have to print -1. Like, how many of you faced any trouble with like the submitting the input file, right? The input file should be in the format of like, you have to take the test cases, and after that you have to write the solution code. Did anyone face trouble with this? Like, anyone forgot to add their test cases and forgot to take the care of the test cases here? No one, right? Like, you should, like, this is the basic template for all of the problems. You should take the number of test cases, and after that you should take the, for each test case, the sample values, and each sample value is fixed in this order: p1 always less than p2, always less than p3. Basically our approach, our solutions always lies in this the manipulation of 2. Basically what here is, uh, the sum of all p1 p2 plus p3, we know it is 1. P1 plus p2 plus p3 is equals to even. Like what, like guess, like, let us take an example of the sample test cases they have given. For 110, the answer should be 2. Why? Because 110, like, you can only, like, take it, consider as both p1 and p2 has draw their whole, whatever they played, they have drawn it to the p3 guy. Whatever they have played, they have drawn whatever they have played. Let us consider, like, both of them played with p3 guy, and both of them draw their games. This is the maximum possibility we can consider, even though there are 8 points remaining to him. So he basically won 4 games. Like here, the 4 games value doesn't matter, because we are considered only maximum possible of draw games, which are 2. Those are games p1 p3 played, and other is p2 p3 played. This is one case. Let us consider another case. What the other case is? Let us consider the case 3, 4, and 5. Like, this is the most random case in the whole, the input, the sample test case. Let us consider, like, the possibility of, uh, like, let us assume this player 1, player 2, player 3. Let us consider, like, the player 2 and player 3 drawn 3 games. Both of them drawn 3 matches.
Then what will it come becomes becomes like 1, it becomes then 2. This remains still. Now we can consider like one has played the 3 games, and the 3 games the one played, it has drawn with 2 and 3. So then it will be also reduced to like what you can assume is the whole games played by both all of them are draws. So how many draws can you make out of them? You can make 3 draws at most. So here 3 draws, here 3 draws. So here the all games played by the P1 player and 3 games played by the 2 comma 3 are draws. So total is 3 plus 3 is equals to 6. Anyone has any doubt about this? Like it is clear, right? Like what is the difference between this and the previous problem? In the previous problem the value is 10, and the 10 value is greater than 1 plus 1, because like if you consider all the P1 and P2 games, their sum is less than the P3. So in this case what you can consider is that all of the games played by the P1 P2 are ties with P3. That you can consider if and only if P3 is greater than sum of P1 plus P2, or equal to also equal to also we can consider like all of the games played by the P1 and P2 are draws with P3, with respect to P3. This is one of the this is one case. Like maybe the handwriting is something. This is the first case, and there will be another case, that is 3 comma 4 comma 5. In this case you can observe is like 3 plus 2, 3 plus 4 is greater than 5. Here there comes the second, the another case where P1 P2 P3. Here P1 plus P2 is greater than P3. This is the opposite case of the case which you encountered the previous. So what we have to do is, what do we what do we know is that what do we know is from each game, from each game we get 2 points. Let us assume like all of the points gained by 3, 4, 5, all of them are all of them are draws. Let us assume all of them are draws. Like we don't know if let us assume if they are draws. If they are draws, like the sum should be like this. The sum is 12, and if they are draw 12 by 2, it is 6. When this case comes out, if P1 plus P2 less than P3, P1 plus P2 greater than P3. If this is the case, then we should consider all of them, maybe all of them could be draw.
How it is? Let us see. P1, P2, P3. Like here, like what should be the basic approach? Like we have to first check if P1 plus P2 plus P3 should be even. If not, we should print -1. If this is not, if this is not true, then we will go to the another case where P1 plus P2 should be less than P3, less than or equals to P3. Uh, why did we consider this case? In this case, like whole games played by the P1 and P2 are draws with P3, and it is already even. Like no need to check if it is possible or not. It is always possible, and it is even. It is already even. And if it is P1 plus P2 is less than or equals to P3, then the answer should be P1 plus P2. Why it should be P1 plus P2? Because all of the games played by the P1 is ties with P3, and all of the games played by the P2 is ties with P3, because their sum is less than the games played by the P3, and the points gained by the P3 is greater than the sum of the remaining two P1 plus P2 games. P1 plus P2 points. So what happened here is the both of the players have drawn their, what are the games they have played with, played are draws with P3. So it is our second case, and our answer is P2, P1 plus P2, because like it should be the answer, right? Remaining cases are all wins, so we have to consider only draws. What are the draws? Here the whole games played by the P1 plus P2 is draws, and P3, like he can't play alone, right? He can't play alone, and P1 plus P2 doesn't play any games, because all of the games they have played are draws with this. If P1 and P2, let us consider, if like assume the case, like if this is like 2 2 4, then let us assume a case like these two are draws with two draws with two draws, two games with P3, and one draws two games with P3. Then what would it be? It would be four draws, right? Let us consider a case if these two guys have played a game and it leaded to a draw. Then what happens is there will be three draws, right? This is the one draw, and the remaining two games are draws with this third guy, right? So it doesn't happens, right? Because like you have to select the maximum draws possible case. What will be the maximum draws possible case? That is the P1 plus P2 case, where P1 and P2 both played only games with P3, and all of them are draws, right? So in this case where P1 plus P2 is less than or equal to P3, all of the games are played individually with individually by P1 and P2 with P3, and all of them leaded to a draw. So the answer here is P1 plus P2 in the second case, right? So like anyone has trouble with the first two cases?
Like anyone has any doubts with first two cases? Like if it is clear, then like you can speak up or write a message. It's clear. Like okay, let us proceed with the third case. Like the third case is where the sum is even and the all of like the third case is where p1 plus p2 greater than p3. P1 plus p2 is greater than p3, and it is even. Like let us consider some cases: 3, 4, 5, 3, 4. Like like 3, 4, 7. This falls under the second category. So there is no need of discussion of this, right? This is already clear. This answer is 7. And 3, 4, 6. This case is not possible because sum is odd. So our only possible case here is 3, 4, 5. Like we are assuming like boundaries. Like if it is reached this case, it should be uh, passed out from the other values, right? Like 3, like 3, 3, 4. Here, like one draw happened, and it leads to 3, 4, 5 case. To reach this case, it has also passed the case like maybe 3, 2, 3. This case may also happen. Like from the for this to happen, it should pass some stage like 3, 1, 2, right? Like you like what you are doing is you are subtracting 1 comma 1 from any of the 3. Like here what you are doing is subtracting 1 comma 1. Like you are checking like is it reachable or not. Like how many type of draws you can get at most. Like here what you can do is you can get 2, 0, 2. Like here you can't get any draws from the player 2 because it is exhausted. And like you can compare these two, like player 1 and player 3. These two guys, player 1 and player 2, has draw 2 games, we can assume like that. Because what we eventually want is we want as many draws as possible, right? We want as many draws as possible. Like here we reduced at each case. At each case we reduced 1 comma 1 comma 1 comma 1 from each guy. So what we have done is we have reduced only draws case, and we eventually what we have done is we have exhausted the whole 3 numbers. So that means the whole games played by the 3, 4, 5 are eventually boiled down to the 6 games, and all of the 6 games were draw. Like you can make this pattern out of every possible case. Like the already from the previous two cases, what we have seen is 3, 4, p1 plus where the sum is odd, it isn't possible to reach the stage. And if p1 plus p2 is greater than or equal to
P1 plus P2 is less than or equal to P3, then also we have find out our answer, which is P1 plus P2. Now in this case what we have done is, like, we have calculated the number of possible games, and we have reached that conclusion that all of the games played are draws. All games in P1 plus P2 greater than P3 can be drawn. Like, why I am saying this? Because from the previous observations you made from the 3 comma, uh, let us assume a case like, what we have known is, uh, 3 comma 4 comma 5 can be boiled down to 6 draws. Like, what do you want to do is, like, you want to avoid one draw, and you can make it like 3 4, like 6, but it isn't possible, right? Because here, uh, the odd sum is not allowed, so you can't make this. So so this is not possible, this is odd. So, like, you can't give any counter example to the one I made. Like 3 comma 4 comma 5 is just an example, but what I have done is, like, I have proved that in this case where P1 plus P2 greater than P3, all of the games were played can be, we can assume them as draw at most, because, like, we can make a roadmap as a previously made, such that all of the games were drawn, right? In the previous, slide or previous slide, I have shown that how, like, how can all of the games can be drawn, all of the games played by all of them, or can be shown as drawn in this particular case where P1 plus P2 plus P3, P1 plus P2 greater than P3, all of the games played by them can be shown as draw. If you want to make a counter example, you should make it like, uh, you have to reach, using this case you have to reach some another case where it satisfies this condition and it doesn't lead to odd sum, and it should be a, it should satisfy this condition, it shouldn't be an odd sum, and it should eventually, I can't boil down to it, because if I boil down to 3 comma 4 comma 5 combination, then those those proposed values of yours can be boiled down to all of them are draws. So what you have done is, you have shown like 3 comma 4 comma 5 is made up of all of, you can make 3 comma 4 comma 5 from the draws. So eventually you can't, like, you have to take a, like, you can't take a counter example, right? For 3 comma 4 comma 5, it is eventually leading to all draws. In this case, whatever the equation you take, it should, if it is not an odd sum, and if it follows this condition, and you can show them as draw, you can take any random case. uh, like, you can take, let us take some another example. Like, can anyone propose another combination like 3 comma 4 comma 5, uh, similar to the 3 comma 4 comma 5 combination? Can any other ideas? Like, can you have any doubt? Like here the, this condition is right, right? This condition is good, right? If P1 plus P2 is greater than P3, then it should be
the all of the game can be shown as done. Why? Because similar to 3 comma 4 comma 5, we can show for like these games also 5 comma 6 comma 7. Let us take this as another case where 5 plus 6 is greater than 7, and the sum is 18. 5 plus 6 11, and 7 plus 7 is equals to 18. It is an even sum. And here what you can show is you can boil them down, to which you can reach the this case. Similarly, for any type of combination of P1, comma P2, comma P3, in in this case can be boiled to 3 comma 4 comma 5. That means using 1 comma 1 subtraction. If you can, if you make any p comma p1 comma p2 comma p3 where it has given that p3 should be greater than or equals to p2 should be greater than or equals to p1, by following this condition and this condition, and p1 plus p2 plus p3, the sum should be even. Like let us see the code. In the code, like you guys can see the code, right? In let us take p1 p2 p3. We have taken the input, and we have initialized our answer, and after that we have taken a condition such that sum of all games is not equals to 0. Sum of all games remainder of 2 is not equals to 0, then we are printing -1, because what does it signifies is odd. Each game contributes 2 points, so the sum of the all games can't be odd, right? The another case is p3 greater than or equals to p1 plus p2. If p3 is greater than p1 plus p2, this is the limit, because all of the games played by the other two players were considered as draws with p3, and p3 can't individually play alone, right? If he plays, he should be played with another player. So to make a draw happen, two players should make the game draw, and all of the draws created by the other two players are already considered. So we can consider up to value p1 plus p2 only. So p1 plus p2 is our answer. Because why? Because the all of the games played by the other two players are considered as draw, and we can, in each game you should take two participants, right? So because for by this, the here the answer become p1 plus p2. And the third case where indirectly we are saying like that, indirectly we are saying p1 p3 less than p1 plus p2. In this case we are directly calculating the number of amount of games they have played. That is indirectly nothing but p1 plus p2 plus p3 by 2. This is nothing but number of games they have played. Like what we have done here is, in this particular p3 less than p1 plus p2 case, we have proved that any in this p3 less than p1 plus p2 case, we have proved that any combination in this format where p3 less than p1 plus p2 and p1 less than p2 less than or equals to p3,
and where p1 plus p2 plus p3 sum is even, we can prove that all of the games played by the players are draws. Like we can prove it using induction. Like you can take some, like I have taken here the test case of 3 comma 4 comma 5. You can pick up another test case like 5 comma 6 comma 7. We can eventually boil it down to this test case, and after that we can show that all of them are draws. So by in this way, in this induction way, we can say that all of the combinations occur in this particular category, or all games are leading to draws in this particular category where p1 plus p2 greater than p3. We can say that from this sample cases 3 comma 4 comma 5, and let us say 5 comma 6 comma 7, and you can take some another cases. You can take some other cases and try to boil down it, and they will eventually, you can like subtracting from each 1 comma from 1 comma from 1 comma 1 comma 1 comma 1 from each type, each case, like p1 from like p1 p3 p2 p3, it's your choice. You can, by subtracting 1 comma 1 1 comma 1 from each case, you can show that every game played is odd. Like there may be, you can draw other possibilities, you can by subtracting 2 comma 0, but this is not our aim. What our aim is, we have to show how much cross you can make. Like so we are subtracting using 1 comma 1. Our aim is not to make any player win, so we are not considering this possibility. We are only considering 1 comma 1 and try to make most of the cases 1 comma 1. Like we are seeing that if there is any 2 comma 0 possibility, like we can't get out. Like we are what we are doing is, we are thinking like how many normal cases you can get, how many draw cases you can get. Like our aim is to not maximize the wins, so we are not considering 2 comma 0, we are considering 1 comma 1. Why? Because we have to maximize our draws, we have to maximize our draws. So we are considering only 1 comma 1 possibility and checking how many draws you can make 3 comma 4 comma 5 in this category p1 plus p2 greater than p3. What we have, after observing 2 3 combinations, what we have done is all of the games played by them are draws. So we are simply calculating number of games they are played. How can we know how many games they are played? By simply adding p1 plus p2 plus p3 and dividing it by 2. How we have known how many games they are played? By, because at, at this case we have considered like some of the values should be even, right? Similarly, by dividing by 2, you can get the number of games. As each game is contributing to, you can get the number of games by dividing the whole sum of the points by 2. Like okay, the explanation part of the third case is over. Do you guys have any doubt about the third case? Like feel free to ask. Do you guys have any doubt about the third case? Like किसी को थर्ड केस में डाउट आया क्या? Like if it is clear, you can mention clear in your chat box, or you can open up your mic and speak. Like the second, the okay, like you like now, like the part is clear, right? The, like you have also seen the editorial code, like can any each one of you can mention what you have done wrong in the contest, like what
what is the mistake you have done in the contest where you have went far from the original logic, like where which part you have misunderstood. Like here the key observation is in the third case, you should know that all of the games can be considered as draw. That is the key point, right? Where like someone mentioned the three cases earlier, but like someone mentioned the previous like someone previously mentioned the three cases, but they have made some mistake, right? After seeing the code, uh, did you realize what mistake have you made? Like anyone, like nobody, like it's free to discuss. Like this is where like you can make some improvement, because like maybe some all of like many of you guys maybe like fend far from the logic at this point, right? This case you should get clear, where you can know that all of the games they have played are uh, can be concluded as draw in that particular case, right? Like what may like how many of you submitted for the first code? I missed the A plus B less than C part in the code, and that's first. Okay, and like like what you have mentioned is you are taking the minimum of total number of possible games, comma, number of points earned by the individual players from by 1 and 2, right? Like I think of them as separate cases because like we have done our analysis, we have concluded like you can show all of them, like you can show all of the p1 comma p2 comma p3, all combinations which are obeys these case p1 plus p2 less than p3, like we are replicating in our code, like we are exactly replicating that in our code. Like we can't see any replication here, but like it is the similar logic at the end, like it's similar answer at the end, but like the way is different. Like we are conclude if like we are considering if it is obeys all these cases, then only we are reaching the conclusion that it is like we can make all of these cases are draws, all games of these cases are draws, which is not true in the case of p1 plus p2 greater this is sorry my mistake, it is p1 plus p2 greater than p3, p1 plus p2 less than or equals to p3. In this case, some cases are not draws, whereas in this case, some cases, all of the cases are draws. So, like
making the idea clearer is important here. Like the maybe the answer may come same at the end, but like the procedure should be fine. But yeah, if we think in this way, like P3 has scored the maximum points. So the only person who is winning in a game or multiple game is P3. Yes, So yes. my analysis breaks down to two cases. Either P3 will win few games, or P3 is not winning any game and drawing all the games with P1 and P2. So if P3 is drawing all the games from P1 and P2, then S by 2 answer we will take. And in Mm. if in case P3 is winning a few games, so then Mm. I will take the answer P1 plus P2, because that number of games P3 has drawn from P1 and P2. Mm. Okay. Like, why are you taking the minimum value here? uh, because Like, in because if we take the second case, like like, P3 is winning a few games and uh, drawing rest of the games, then we cannot say S by 2. Then we have to say that the number of games P3 is drawing, which is equals to the number of games played by P1 and P2. So sum of P1 and P2. Yeah, both the solution are same. Like whatever we discussed, if you compare your solution and the solution we discussed, both are same because let's say P1 one minute. Huh. Let's say P3 is greater than P1 plus P2. Then which one you are choosing? You are choosing P1 plus P2. Okay, and if Yes, भैया. हमने क्या किया हमने बेसिकली मीन्स तुमने जो मिनिमम कंडीशन में लगाया उसी को हमने एक ब्रेक कर दिया तो दोनों कोड सेम ही है तो Yes, लाइक भैया. लॉजिक क्लियर है ना क्वेश्चन का सभी को like the logic, like the like here, Surya has posted another logic. Like everyone has also understood this logic, right? Like what he has explained, right? Everyone understand the both approaches, right? Does anyone doesn't approach any one of the approach? Like you can ask doubt about any approach here. Like all of the guys have understood the both of the approaches, right? So I think there isn't any doubt about the first question now. Like I used a loop while any score greater than zero, decrement the maximum to scores greater one and decrement one till only one score. Like no, like like here I explained, like you can make the cases more clearer. Like you like it doesn't require any while loop. Like you can't take like I will subtract from these two people only. Like you can't say before, like before doing the actual procedure. So like you can't make it like a code. Like what we have done is we are drawn to a conclusion, like both of them, all of them eventually lead to draws. Like you are not taking the value from single. Like let us take an example, let us take the example 3 comma 4 comma 5. Like you are not repeatedly subtracting from these two values or these two values. You are repeat you are eventually shifting, right? You are first taking this value, then taking these two values, and again taking these two values. Like here you are shifting, like what, to make everyone by decrement by 1 comma 1 operation, 1 comma 1 for doing this operation repeatedly. You are jumping from each of the one first player, second player, third player. Like you can't make the claim like I will subtract from these two members only, after that I will subtract from these two members. This is my standard approach. You can't like fix it like that. So like the approach using while loop is not good, is not appropriate here. Like do you understand why the approach isn't appropriate? Because we are uh, does not taking like fixed. Like what you have to make all of them are draws by
taking optimally any two. By you may take 1 comma 2 here, 1 comma 3 here, or 2 comma 3. You have take them in such order that all of them are leading to draw. Even if there is one case it may not lead to draw, we doesn't want that case. What we want is maximum draws possible. How can we make the maximum draws possible? We are eventually trying it out. And the our answer is, in that particular case we can make any of the combinations into 1 comma ones. So like you can't fix the particular two values and say like I will take only these two values. So the while loop approach doesn't work. Like it's clear right now. Like Uh, okay, let us skip for the second question. uh, okay. How many of you tried the second question? Uh, ओके लाइक ट्राई करना मतलब कितने क्वेश्चन पढ़ा है एटलीस्ट हैंड रेज कर सकते हो तुम स्क्रीन विजिबल है मैंने हेलो स्क्रीन विजिबल है सबको ओके कूल ठीक है हम सेकंड क्वेश्चन ओके कूल लेट मी ओपन एक मिनट वेट करना ठीक ओके हम लाइक हम क्या करेंगे ना हम कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे वो समझते हैं ठीक है लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग तो ठीक है लाइक सॉल्व करना हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन वो सीखते हैं ठीक है तभी तुम सीपी में बेटर कर पाओगे लेट्स से ये क्वेश्चन है पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लाइक डिफाइन द लाइक टू फॉक्स फाउंड एरे एक एरे गिवन है इन नॉन नेगेटिव इंटीजर ठीक है उसमें क्या है ए एज अ डिफाइन द लोनलीनेस ऑफ ए एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के एक पॉजिटिव इंटीजर के होगा जो लोनलीनेस डिफाइन करेगा और वो क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा ठीक है such that for any two positive integer I and j this is this condition will holds अब ये condition क्या है ai और ai plus 1 like ये जो ऑपरेशन है like बीच में ये ऑड ऑपरेशन है इधर एक्सप्लेन भी किया हुआ है where x और y denotes the bitwise odd operation of x and y okay ठीक है तो इसमें कुछ बोला है करना है इसमें ऐसा एक के मुझे निकालना होगा जिससे लाइक फॉर एवरी टू पॉजिटिव इंटीजर आई एंड जे ये वाला कंडीशन होल्ड करे ठीक है ये बोला है अब तुम्हें क्या करना है कैट एंड फॉक्स वांट टू नो हाउ लोनली द एरे ए इज ओके ठीक है तो बेसिकली मुझे के का वैल्यू निकालना है अब क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है सॉल्व कैसे करें ठीक है लाइक पहला अप्रोच मुझे आएगा कि इसको बाइनरी सर्च से कर सकते हैं
अब बाइनरी सर्च से क्यों करेंगे हम, ठीक है, ये कैसे अप्रोच है, लाइक तुम में से कितनों ने रिकर्शन का बाइनरी सर्च का क्लास अटेंड किया था? अगर नहीं किया था तो भी बोल सकते हो कि नहीं अटेंड नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तुमने अटेंड किया था, अगर तुमने क्लास अटेंड किया था तो हमने एक चीज़ बोला था, लाइक जब बाइनरी सर्च और आंसर का क्वेश्चन आएगा तो तुम कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन बाइनरी सर्च और आंसर के ऊपर है, ठीक है। पहली बात तुम्हें मैक्सिमम निकालने को बोलेगा या फिर मिनिमम निकालने को बोलेगा, ठीक है। इधर तुम देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या, मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम इंटीजर निकालना है के का, तो इससे मुझे एक आइडिया आ रहा है कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर वी कैन यूज, ठीक है। अब इसमें बिटवाइज ऑड ऑपरेटर यूज करना होगा बाइनरी सर्च आंसर के ऊपर, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक इससे कुछ जो ये ऑपरेशन है इससे तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या बोलना चाहता है। एक एग्जांपल देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं कोई भी एक एग्जांपल उठाता हूँ, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। एक्सप्लेनेशन कौन सा वाला है, ओके, सेवन्थ एक्सप्लेनेशन आंसर है, 7 मतलब लास्ट वन, ठीक है, जिसमें n का वैल्यू 8 दिया है एंड ये तुम्हारा कुछ कुछ ऐड है 0 1 3 2, ओके। लेट्स राइट दिस डाउन, ठीक है। तुम्हारा एरे है, उसमें वैल्यूज क्या क्या है, पहला वैल्यू 0 है, 1 है, देन क्या है 3 2 2 1 0 3, ओके, 3 2 2 1 0 3, ठीक, ये तुम्हारा गिवन एरे। अब तुम्हें एक ऐसा के फाइंड करना है, ओके, सच दैट ये जो कंडीशन है ये होल्ड करे, ठीक है, और के का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ इधर आंसर में बोला है, लेकिन इससे तुम्हें फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट वन इंटीजर द लोनलीनेस ऑफ द गिवन एरे, एंड लास्टली तुम्हें कुछ बोला है ये वाला पार्ट, इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स देयर बिटवाइज और शुड बी द सेम, ओके। Note that the loneliness of A is well defined because for k is equal to n, the condition is satisfied. Like let's say k का वैल्यू n है, तो तुम क्या कर सकते हो, पूरे एंटायर एरे को ले सकते हो, ठीक है, और इसका और कर दो, ठीक है, ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, n हो सकता है, ठीक है। ये इधर तक समझ में आया कैसे अप्रोच किया मैंने, लाइक क्वेश्चन को कैसे पढ़ा, उसे लाइक कीवर्ड्स कैसे निकाले मैंने कि मुझे क्या करना है। इतना पार्ट क्लियर कि क्यों बाइनरी सर्च लगाना है मेरे को, लाइक मैं कैसे देख पाया कि स्मॉलेस्ट क्या है। अगर इधर मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम के भी बोलता तो भी मैं क्या करता, बाइनरी सर्च आंसर का अप्रोच सोचता पहले, ठीक है। वो बिकॉज बाइनरी सर्च आंसर का कंडीशन ये होता है कि तुम्हें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है या फिर लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। ये क्लास में एक्सप्लेन किया गया है कि बाइनरी सर्च आंसर कब होता है, जब तुम्हारे पास प्रेडिकेट फंक्शन होता है। प्रेडिकेट फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन है जिसमें लाइक तुम्हें फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉल्स दे रहा है, फिर लेट्स से लाइक प्रेडिकेट फंक्शन तुम्हें क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। लेट्स से ये लाइक एक फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन गिवन है तुम्हारे पास, उसमें कुछ पैरामीटर तुम दोगे, वो तुम्हें कुछ आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। अब उसका आउटपुट क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है, लाइक लेट्स से फॉल्स फॉल्स हुआ, फिर उसके बाद से ट्रू गिवन ट्रू दे रहा है फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद में जितना भी वैल्यू आएगा सारे ट्रू आएंगे। एक बार अगर स्टेट चेंज कर लिया, ठीक है, तो वो फिर से स्टेट नहीं चेंज करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू हो सकता है, पहले ट्रू हो जाए फिर फॉल्स देना स्टार्ट करे, ठीक है। ये दो ही केस होते हैं प्रेडिकेट फंक्शन के, ठीक है, लाइक मैंने सर्च ऑन आंसर के केसेस में, ठीक है। तो मैंने इधर इससे फाइंड आउट कर लिया कि मुझे बाइनरी सर्च आंसर करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव के, ठीक है।
अब मेरे पास जो दो पॉसिबिलिटीज है, ये एक पहला वाला पॉसिबिलिटी कि फॉल्स फॉल्स दे रहा है, फिर फॉर अ सर्टेन वैल्यू ट्रू दे रहा है, फिर नेक्स्ट में क्या दे रहा है, ट्रू ट्रू देन फॉल्स फॉल्स। नाउ यहाँ पे एक ट्रिक है, लाइक तुम्हें अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने बोला है तो हमेशा फर्स्ट वाला केस ट्रू होगा, ठीक है। एंड अगर इधर लार्जेस्ट बोलता तो सेकंड वाला केस ट्रू होता, ठीक है। ये लाइक प्रैक्टिस करोगे जितना क्वेश्चन तुम्हें लाइक ये पैटर्न दिख जाएगा कि जब भी स्मॉलेस्ट निकालने के लिए बोला है तो तुम्हें क्या करना होता है, लाइक ये वाला पैटर्न बनता है और तुम्हें सबसे पहला जो ट्रू वैल्यू है वो निकाल के देना होता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ की यू आर गेटिंग द ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये तुम्हें आंसर में निकालना है, ठीक है। अब देखो, लाइक तुम में से हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बिट मैनिपुलेशन, लाइक बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो ये तो फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग में भी कराया था सर लोग, सर ने। लाइक कितनों को याद है, लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन बाइनरी? ओके गुड। ओके बेसिकली हाँ, लाइक कोई बोल सकता है कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक कोई भी एक नंबर का, लेट्स से 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोई एक बार बोल, माइक ऑन कर दो। यस 101, cool. 5 का 101 होता है, 101 कैसे बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 2 की पावर में करते हैं। तो तुम ऐसा एक लाइक क्विकली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 देन उसके बाद 2 आता है, देन उसके बाद 4 आएगा, और देन उसके बाद 8 आता है। तो 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 तो वी कांट टेक 8, सो विल बी टेकिंग 4, देन आफ्टर दैट लाइक 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 बचा, तो वी कांट टेक 2, सो विल बी पुटिंग 0, we will be putting 0, then उसके बाद हम we have 1, so we can put 1। ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऐसे अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे, जो लाइक हम केस कंसिडर कर रहे हैं, उसको पहले तो बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोई बार बोल दो, माइक ऑन कर दो तो इजी रहेगा मेरे लिए। लाइक 0 का 0 होगा, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यस कूल, 001, 001 की जगह हम सिंपल 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। देन 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 आएगा, देन 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा 10 0, देन अगेन 2, सो 2 का क्या आएगा, अगेन 10 1, देन 3 2 आएगा, ओके 3 2, देन इसके साथ करूँगा 3 3 आएगा, देन अगेन 3 3, देन 4 4, ठीक है। ये बिट में जो रिप्रेजेंट हुआ उसको मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि लेट्स से हाँ, मुझे क्या करना होगा, एक के निकालना होगा। लेट्स से के का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 तक समेशन क्या है, ये वाला है। तो मुझे चेक करना है कि अगर मैं लाइक इसका कुछ वैल्यू आएगा,
उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला ऐड करने की कोशिश करूँगा और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। फिर मैं चेक करूँगा फिर भी सेम लाइक डिजायर्ड ऑड आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट में जाऊँगा, चेक करूँगा कि सिमिलर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, लाइक ये वाला ऐड करूँगा मेरे सीक्वेंस में, 3 ऐड करूँगा और ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, फिर ऐसे में लाइक एक विंडो टाइप का के साइज का विंडो लूँगा। लाइक लेट्स से मैं के यहाँ पे 4 लिया, 4 साइज का विंडो लूँगा और उस विंडो में मैं चेक करूँगा कि जो ऑड है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। नाउ अब तुम लाइक इस पूरे का ऑड अगर निकालोगे तो क्या होगा, कोई बता सकते हैं ऑड क्या होगा, लाइक पूरे एरे का ऑड। तुम लोग को बिटवाइज ऑड ऑपरेटर पता है? अ, नहीं आता तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर देंगे। हाँ हाँ, लाइक बिट में बताओ, लाइक हाँ ओके ठीक है, 3 है तो उसका बिट बेसिकली 1 1 होगा। लाइक एक बात बताओ, सभी को आता है क्या बिट वाइज ऑड एंड ऑपरेटर? अगर नहीं आता तो लाइक डिस्कशन करने का कुछ पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज ये ऑड ऑपरेशन के ऊपर तुम्हें समझना होगा कि ऑड कैसे काम करता है। ओके ओके, बेसिकली बिट में लाइक हमने क्लास में अभी तक नहीं किया करवाया है, लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ तब कराएंगे। ठीक है, एंड हम रिसोर्सेज शेयर कर देंगे तुम्हें। बेसिकली बिटवाइज ऑड एंड ये समझना होगा, लेकिन ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने लाइक 12th के फिजिक्स में ऑड गेट नॉट गेट पढ़ा है ना। ठीक है, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट था ऑड का एंड का नॉट का, वही सेम कॉन्सेप्ट है। लाइक 0 और 1 1 होता है। लाइक अगर दोनों 1 है तो भी 1 होगा। लाइक वही होता है और का कॉन्सेप्ट। लाइक और का टेबल है, दोनों अगर 1 है तो 1 होगा। लाइक 0 1 है देन ऑल्सो 1 होगा, 1 0 है तो भी 1 होगा, इन तीनों केसेस में। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। बट अगर दोनों वैल्यू 0 है, जिन दोनों का ऑड कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? आंसर आएगा 0। ठीक है भाई, 12th का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग में भी सेम है। तो इन सबको ऑड करेंगे, देखो 0 और 1 का ऑड करेंगे 1 आएगा, फिर इसका ऑड करेंगे 1 1 आ जाएगा, फिर ऑड करेंगे 1 1 रहेगा, फिर भी ऑड करेंगे 1 1, फिर ऑड करेंगे 1 1 1 1 1 1, लास्टली तुम्हारा ऑड वैल्यू लाइक 1 1 आएगा, जो कि बेसिकली 3 है। एक 3 का बिट रिप्रेजेंटेशन है, हम लाइक बिट में समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ इधर तुम देख सकते हो। लेट्स से मेरा आंसर ये है। ठीक है, इतना मेरा आंसर है, लाइक के वैल्यू है इतना आंसर, मतलब के वैल्यू 1 2 3 4, के वैल्यू मेरा 4 है। ठीक है, तो अगर के वैल्यू 4 है तो के वैल्यू 5 हो सकता है क्या? तो बता सकते हैं कि ये कि अगर के वैल्यू 4 है तो आंसर पॉसिबल आंसर 5 हो सकता है क्या? लेकिन मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नहीं बोला, क्योंकि इसमें तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए बोला है। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर के वैल्यू 4 है तो के वैल्यू 5 है क्या? हो सकता है क्या? लाइक बोल सकते हैं 5 होगा, पॉसिबल है कि नहीं? कुछ 5 possible. The question is that if let's say a possible k value, my answer is 4. Okay, possible value of possible answer is 4. Okay, then is it possible to be the 5 be the answer? Like k value 5 हो सकता है क्या? Not for this question, in general. Like मैं बोलना चाहता हूँ, अगर k value 4 है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अगर देन के वैल्यू 5 हो सकता है क्या? बेसिकली आंसर होगा कि हो सकता है, पॉसिबल है। वाई? अगर के वैल्यू 4 है तो बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये वाला इसका और देन
इस पोर्शन का और, देन इस पोर्शन का और, देन इस पोर्शन का और, ये सारे वैल्यूज सेम लाइक वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये k इजिकल टू 4 के लिए है, ठीक है। अब k इजिकल टू 5 के लिए सेम वैल्यू, तो k इजिकल टू 5 के लिए क्या होगा, 0 1 3 2 2, ये एक पॉसिबल होगा। तो इस लाइक बेसिकली ये पोर्शन तक 0 1 0 1 3 2, ये k इजिकल टू 4 के लिए था, k इजिकल टू 5 के लिए एक और 2 ऐड कर दिया। तो इधर तक और क्या होगा, इधर तक और भी मेरा 1 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइक इसको नेक्स्ट क्या होगा, 1 3 2 2 1, इसका और करोगे तो भी 1 लाइक 3 आएगा, लाइक इसका और करोगे तो और वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, बेसिकली 1 1 आएगा, लाइक इन बिट्स ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसका और करोगे तो भी 1 1 आएगा, ठीक है। फिर तुम अगर 3 2 2 1 0, तो इसका भी और करोगे ना तो तुम देखोगे कि 1 1 आएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो अगर k वैल्यू 4 पॉसिबल है तो k वैल्यू 5 ऑटोमेटिकली पॉसिबल है, ठीक है। देन k वैल्यू 6 भी पॉसिबल है, k वैल्यू 7 8 पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम्हें इससे क्या करना, इससे समझ में आ रहा है कि जो मैं बाइनरी सर्च में प्रेडिकेट फंक्शन फर्स्ट वाला अब बोला कि फॉल्स फर्स्ट देन ट्रू, फर्स्ट पहले फॉल्स आ रहा था कुछ वैल्यूज के लिए, फिर ट्रू आना स्टार्ट किया आंसर, ठीक है। ट्रू ट्रू, लेट्स से कौन फॉल्स लेता, तो पहले 3 वैल्यू के लिए फॉल्स है, फिर 4 के लिए ट्रू आया, देन आई कैन सी दैट 5 के लिए भी ट्रू आएगा, 6 के लिए भी ट्रू आएगा। ये तुम लाइक कैलकुलेशन करोगे अगर और निकालोगे खुद से तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। 5 के लिए 6 के लिए सब के लिए ट्रू आएगा, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च आंसर करना है एंड तुम्हें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। अब इसके बाद वाला पोर्शन बेसिकली बिट वाइज ऑपरेशन के ऊपर है और तुम्हें क्या करना होगा, इससे तुम्हें मिड वैल्यू मिल जाएगा, है ना। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है? इन जनरल हम सर्च स्पेस डिक्रीज। यस, बेसिकली बाइनरी सर्च में सर्च स्पेस होता है। सर्च स्पेस क्या होता है, जिस स्पेस में हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक एल लूँगा, जो पॉसिबल आंसर क्या है, मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में 1 है, लाइक मिनिमम पॉसिबल आंसर 0 है, ठीक है। नहीं, 0 नहीं हो सकता मिनिमम पॉसिबल आंसर, बिकॉज तुम्हारा मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है कि एरेस का लाइक एरे में जो भी वैल्यू है सारे सेम हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम, हाँ, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 है, लाइक तुम इस इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, लाइक जब सारे वैल्यूज सेम हो जाएंगे, लाइक ये सेकंड वाला केस तुम चेक कर सकते हो 2 2 2, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो मिनिमम आंसर तो 1 हो सकता है। अब मैक्सिमम आंसर तो इन्होंने खुद ने बोल दिया कि लाइक मैक्सिमम आंसर ये होगा k इजिकल टू n, लाइक पूरे एरे का ऑड ले लो, ठीक है। तो आर वैल्यू मुझे मिल गया n, ठीक है। अब तुम्हें l मिल गया, आर का वैल्यू n मिल गया, ठीक है, मैक्सिमम। तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली बाइनरी सर्च लगाओगे, बाइनरी सर्च में मिड फाइंड करो, सिंपल। मिड फाइंड कर लिया, मिड इजिकल टू क्या होता है, l प्लस आर बाई 2, ठीक है। अब मिड मिल गया, अब मैं चेक करूँगा कि मिड एक पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं। बेसिकली मैं चेक करूँगा कि मिड मिड के अगर मिड वैल्यू पे मेरा फॉल्स आ रहा है या फिर ट्रू आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो मैं क्या करूँगा,
तो मैं सर्च स्पेस लाइक लेट से ये वाला वैल्यू आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, इसमें ट्रू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लाइक इस साइड वाला पोर्शन लेने की नीड ही नहीं है मेरे को अभी, ठीक है। अब मैं इस पोर्शन में जाऊंगा, इस पोर्शन में चेक करूंगा कि मुझे ट्रू मिल सकता है कि नहीं। सिंपल इस पोर्शन में जाकर लाइक फिर से बाइनरी सर्च करूंगा, फिर मुझे अल्टीमेटली ये वाला ट्रू मिल जाएगा। और अगर लेट से पहले लाइक कभी फॉल्स आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस साइड में चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं इस साइड ये वाला पोर्शन लाइक इसके साइड इस साइड वाला पोर्शन लूँगा, ठीक। तो ये बेसिकली बाइनरी सर्च का है तो कॉन्सेप्ट, तो ये तो इजी है, ठीक। उसके बाद तुम्हें इसके अंदर जो लूप चलाना होगा वो कैसे चलाओगे, ठीक। वो उसमें बेसिकली आता है, तुम्हें लाइक मिड पोजीशन मिल गया, बेसिकली के पोजीशन मिल गया, तुम्हें क्या करना है, एवरी के लाइक एवरी मिड सब एरे में, सब एरे मतलब क्या होता है, सब एरे बेसिकली कंटिग्यूअस पोर्शन ऑफ एरे होता है ऑफ सम लेंथ, ठीक है। अब मेरा लेंथ इधर फिक्स है मिड, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं मिड लेंथ का एक सब एरे चेक करूँगा कि इसका और वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट का चेक करूँगा इसका और वैल्यू क्या है, फिर नेक्स्ट का चेक करूँगा, सभी का और वैल्यू मिड लेंथ का सारे सब एरे का और वैल्यू सेम होना चाहिए। और ये अल्टीमेटली किसके साथ सेम होगा, ये अल्टीमेटली तुम्हारा टोटल एरे के साथ सेम होगा, क्योंकि और ऑपरेशन है, और में सपोज पहले से 1 है, तुम फिर से 1 ऐड कर रहे हो तो तुम्हारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये इन सब का मैंने और किया था तो लास्ट में 4 आया था ना, 4 इज इक्विवेलेंट टू 1 ठीक है। ये 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो मैंने प्रीफिक्स सम बनाया था, प्रीफिक्स सम बना के, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें और पूरे और का सॉरी पूरे एरे का और पहले करके रखना है, ठीक है। और उसके साथ तुम्हें चेक करना है कि ये वाला पोर्शन इस मिड सब एरे का और मेरा जो पूरे एरे का और के साथ सेम है कि नहीं, ये हर पोर्शन के लिए चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भैया मैं तो ये कर लूँगा लाइक फर्स्ट आइट्रेशन में 0 1 3 एंड 2, मैं k इक्वल टू 4 के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका तो और मैं निकाल लूँगा, बट मैं ये कैसे करूँगा कि ठीक है, हाँ, ये 0 1 3 2 इसका तो तुम और निकाल लोगे। अब तुम इसका और है तुम्हारे पास, तुम इसका और कैसे निकालोगे कि 1 3 2 फिर अगेन क्या है 2 वैल्यू, ठीक है। अब तुम ये तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में निकाल सकते हो, ठीक है, बट बिग ऑफ एन स्क्वायर तुम करोगे तो टी लिया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें बिग ऑफ एन का अप्रोच लगाना है। अब बिग ऑफ एन में तो तुम नहीं कर सकते, देखो। तो मैं क्या करूँगा, मैं बिट ऑपरेशन का हेल्प लूँगा, ठीक है। बिट वाइज एक एरे बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें मेरा क्या स्टोर रहेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग वन वेरिएबल, पहले तुम क्या कर रहे थे, पहले तुम एक वेरिएबल में इन सब का और स्टोर कर रहे थे, ठीक है। मैं नहीं करूँगा, मैं एक 30 साइज का एरे ले लूँगा, ठीक है। जीरो बेस इंडेक्सिंग होगा एंड 30 साइज का एरे लूँगा, एक एट अ पर्टिकुलर पोजीशन मैं चेक करूँगा, लाइक लेट से मैं 1 पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 का बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 होगा, तो मैं इसका 1 फर्स्ट इंडेक्स में जीरो इंडेक्स में मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा, फिर 3 आया, मैं क्या करूँगा, 3 मतलब क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फर्स्ट इंडेक्स पे एक बार इंक्रीमेंट करूँगा तो मैं वैल्यू आएगा 1, सेकंड इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करूँगा तो 1 आएगा, फिर 2 आया, 2 मतलब क्या होता है, 1 0 होता है, ठीक है। 1 0 मतलब लाइक बिट में क्या होता है, ये वाला पहला इंडेक्स होता है, फिर ये वाला सेकंड, ठीक है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। तो इसमें क्या करूँगा, इसमें तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसमें इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 के लिए क्या करूँगा, अगेन इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बेसिकली ये 3 हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेकिन नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा, लेट्स से नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा और ये वाला 1 मेरे रेंज से चला जाएगा, क्योंकि मेरा विंडो का साइज क्या है, के है, ठीक, लाइक 4 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको तो ऐड करूँगा, नॉर्मल मैं जिस वे में ऐड कर रहा था उस वे में ऐड कर दूँगा,
और इसका बिट जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं इस एरे से डिक्रीज कर दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि मेरा जो ओवरऑल एरे का ओवरऑल एरे का जो बिट रिप्रेजेंटेशन है और इस एरे का बिट रिप्रेजेंटेशन सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, सेम काम चेक करूंगा। अगर सेम नहीं है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि के साइज का के मेरा पॉसिबल आंसर है, इट्स बेसिकली फॉल्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें एक मिनट, अ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या क्या जानना पड़ेगा। ठीक है, एक तो मैंने एक बाइनरी सर्च, अभी तक ये समझ में आया तुम लोगों को क्या मैं बोलना चाह रहा था? कैन यू वंस रिपीट? ओके, बेसिकली if fifth element does not change, तुम लोग ना माइक ऑन करके बोल सकते हो कि एक्सप्लेन करने के टाइम तो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक एरे लेना है। ठीक है, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, मैं के साइज का जो विंडो बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें तुम ऑड निकालना है। ठीक है, इस ऑड को तुम कैसे निकाल सकते हो? एन स्क्वायर अप्रोच से निकाल सकते हो। एक और सब एरे का और निकालने के लिए बिग ऑफ एन लगेगा, नेक्स्ट सब एरे का निकालने के लिए बिग ऑफ एन, नेक्स्ट के साइज का सब एरे बिग ऑफ एन लगेगा। ठीक, ऐसे बिग ऑफ एन नहीं लगेगा, बिग ऑफ के लगेगा, विच अल्टीमेटली तुम्हारा के स्क्वायर हो जाएगा, जो जो भी एन स्क्वायर की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम टीएल दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। तो मैं और एक वेरिएबल में स्टोर करने की जगह एक एरे एक्स्ट्रा स्पेस लूँगा। ये तो पता है ना तुम लोगों की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए तुम्हें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना होता है। ठीक है, एक एरे लूँगा जिसका इंडेक्सिंग होगा, ये 0 है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स होगा, ये थर्ड इंडेक्स होगा, ये फोर्थ इंडेक्स होगा। और मैं हर एक वैल्यू पे जाऊंगा। मेरे पास सपोज 3 आया, मैं 3 आया तो मैं बोलूँगा 3 के पास कौन सा बिट सेट है, कौन से बिट 1 है। 3 मतलब 1 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 मतलब ये 0 है। ठीक है, ये 0 है और ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो 0 पे 1 है, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर दिया। 1 पे 1 है, फिर से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, लेट्स से मेरे पास उसके बाद 4 है। 4 का बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 0 होता है, 0 0 होता है। तो मैंने किया, मैं जीरो इंडेक्स में 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट इंडेक्स में 0 है, नो चेंज। सेकंड इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो मैं इधर जाके थर्ड मतलब ये सेकंड इंडेक्स होगा। ठीक है, 0 बेस इंडेक्सिंग में ये सेकंड इंडेक्स होगा, तो मैं इधर जाके इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक, ऐसे मैं एक एरे स्टोर करूंगा। अब मैं के साइज का एक विंडो जो था उसमें सारे वैल्यूज को मैंने इसमें स्टोर कर लिया। अब जब इसके बाद वाला वैल्यू मैं स्टोर करने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सामने से एक वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऐड कर रहा था तो इसको मैं सिमिलरली ऐड कर दूंगा। ठीक है, और पहला जो वैल्यू था उसको मैं क्या करूँगा, इस एरे से उसका जो बिट रिप्रेजेंटेशन था वो डिक्रीज कर दूंगा। फिर मैं और डिक्रीज करने के बाद मैं क्या चेक करूँगा कि ये वाला वैल्यू मेरे पूरे एरे के और के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक है इसका। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें बाइनरी सर्च पता होना चाहिए, तुम्हें प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट, स्लाइडिंग विंडो, फिर बिट मैनिपुलेशन तो चाहिए। लेकिन बिट मैनिपुलेशन का टेक्निक चाहिए बेसिकली कि इस एरे में स्टोर करके। ठीक है, ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, कोड मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कोड बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है एंड थोड़ा लेंदी। खुद से ट्राई करो जो समझाया। इससे नया टॉपिक तुम क्या पढ़ सकते हो ना, बाइनरी सर्च तो पहले से पढ़ा है हमने, और तुमने नहीं पढ़ा तो तुम उसका भी रिसोर्स शेयर कर देंगे, उसको भी पढ़ सकते हो। और तुम बिट मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ सकते हो और स्लाइडिंग विंडो के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, और लेकिन तुम लोग एक काम करना, थर्ड क्वेश्चन भी ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन वाज इजियर देन दिस सेकंड क्वेश्चन इन टुडेस कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये वाला ज़्यादा इजी था सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इसको ट्राई करना और डाउट अगर कोई हो तो
हाँ हाँ, डाउट आए तो तुम लोग ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, लाइक नॉर्मल जनरल डाउट है किसी को कुछ? अ, सूर्य पृथ्वी का गुप्ता, तुम लोगों को लाइक जनरल डाउट या फिर कुछ भी पूछना है सीबी से रिलेटेड पूछ सकते हो। बी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तुम लोगों को? लाइक तुम लोग माइक ऑन कर सकते हो यार। हाँ भैया। हाँ, और ऐसे जनरल कुछ डाउट पूछना है कैसे सीपी रिलेटेड या कुछ भी तो पूछ सकते हो। भैया आप सीपी में कौन सा एडिटर यूज करते हैं? एडिटर, कोड एडिटर, अच्छा वी एस हाँ। कोड यूज़ कर सकते हो, वी एस कोड भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो अच्छा लगे दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। एक मैं जनरली वी एस कोड यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें तुम क्या कर सकते हो ना, जो एक्सटेंशन आता है बहुत सारे, जैसे सी पी आई जज आता है, उसमें तुम लाइक साइड में इनपुट आउटपुट देख के उसको लाइक टेस्ट कर सकते हो कि करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। तुम्हें लाइक मैनुअली चेक नहीं करना होता कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट और तुम्हारा आउटपुट है वो सेम है कि नहीं। लाइक सी पी आई जज एक्सटेंशन आता है वी एस कोड में, वो उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो अच्छा है, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, सी पी आई सॉरी वी एस कोड और तुम्हारा सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट कल है, एट कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन सुबह शेयर कर देंगे हम, ठीक है। प्रॉब्लम शुड प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस करने के लिए देखो, अगर सीपी में इन जनरल लाइक सीपी के लिए या फिर डीएसएस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लाइक सीपी में इम्प्रूवमेंट करना, सीपी ओके। देखो बेसिकली सीपी में तुम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। लाइक तुम नहीं बोल सकते कि कौन से टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तुम्हें रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तभी तुम्हें सीपी में बेटर कर सकते हो, क्योंकि सपोज तुम मैंने बोल दिया कुछ कुछ ये कुछ टॉपिक है, इससे प्रैक्टिस कर लो, कल तुम कॉन्टेस्ट देने जाओगे उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरे किसी नए टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो सीबी में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो तुम्हें रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। अब प्रैक्टिस कैसे करें, लाइक हार्ड लेवल कैसे, तुम लाइक अपना तुम्हारा कुछ रेटिंग होगा, ठीक है। हमेशा क्या करना, तुम्हारी रेटिंग से +200 रेटिंग तक, लाइक लेट्स से तुम्हारा रेटिंग लाइक कितना 1200 है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम 1200 से 1300 या 1400 रेटिंग का तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तुम लोग टैग लगा सकते हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तुम लोगों को पता है कैसे लाइक रेटिंग का टैग लगाते हैं, किसको पता है? मैं दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ पता। चलिए दो मैं अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हाँ, तुम बेसिकली एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें देखना टैग लगा सकते हो कि रेटिंग कितना रेंज का है, लाइक 1200 से 1300 रेटिंग लगा के, लाइक तुम्हारा जो अभी करंट रेटिंग होगा उससे +200 रेटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना तुम कॉन्टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करोगे, ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट हो पूछ लो, हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हम चाहते हैं कि कॉलेज का सीपी कल्चर इम्प्रूव हो, ठीक है। सीपी सब करे, सीपी में अच्छा करे, ठीक है। तो हम हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो तुम्हें बस डाउट पूछना है ग्रुप में, मेंटरशिप ग्रुप में, कैसे भी। अगर उसमें भी लाइक पूछने में तुम्हें यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू कैन पर्सनली डीएम एनीवन, एनी सीनियर, ठीक है, तुम्हें गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर कोई और डाउट है तो तुम पूछ लो, वरना ठीक है। हम सेशन को एंड कर सकते हैं, आज के लिए बहुत लेट हो गया।
अगर कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो।